Hello, good morning, students. We are discussing demand forecasting and we are discussing methods of demand forecasting. In the earlier videos, we discussed consumer survey method, expert opinion survey, and we have also discussed trend projection method. Today, we are going to discuss a very important topic of your syllabus, criteria of a good forecasting method. It is also known as standard or best forecasting method or characteristics of ideal forecasting, जो भी आप कहें. ओके, किस मेथड को हम बेस्ट मेथड कहेंगे, उसके क्राइटेरिया क्या है, वी विल डिस्कस टुडे. फर्स्ट, एक्यूरेसी. The demand forecasting method should be as accurate as possible. So how can you check the accuracy? You can check the accuracy of the past forecasting on the basis of present sales, and you can check the accuracy of present forecasting on the basis of future sales. Okay, मान लीजिए कि ऐसे एक्स फोरकास्टिंग मेथड है. अकॉर्डिंग टू एक्स फोरकास्टिंग मेथड, डिमांड फॉर ए कमोडिटी will be 10,000 units in the year 2020 in a particular region. अगर ऐसा फोरकास्ट किया है और डिमांड फॉर प्रोडक्ट 9,500 है, the method is considered as accurate method. Why? Because the method have achieved 95% result. उसकी एक्यूरेसी लेवल कितना है? 95% है. 10,000 की फोरकास्टिंग की है, 9,500 है. ओके, दिस मेथड इज कंसिडर्ड एज एक्यूरेट मेथड. मगर अगर सेल्स 6,000 है कि 5,000 है, द मेथड इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्यूरेट मेथड. ओके, सो हाउ कैन यू check the accuracy? On the basis of degree of deviation between actuals and sales. Okay, actual and forecast. Forecast कितना है? 10,000. Actual sales कितना है? 9,500. The method is considered as accurate method. Okay, so the first and the most important criteria is that this method of demand forecasting should be as accurate as possible. Second, simplicity. The method should be simple and easy to understand. Of course, whenever the investigators or a research team is undertaking demand forecasting, so generally mathematical techniques, statistical techniques, sometimes econometric techniques are used. Why? Because future is full of uncertainty. आप फ्यूचर के लिए डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं और फ्यूचर तो फुल ऑफ अनसर्टेनिटी है. सो टू रिड्यूस, इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द रिड्यूस ऑफ अनसर्टेनिटी, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, मैथमेटिकल टेक्निक्स, इकोनोमेट्रिकल टेक्निक्स आर यूज्ड. मगर उसका यूज भी एक लिमिट में होना चाहिए. इतनी अगर कॉम्प्लेक्स मेथड यूज करें, डिफिकल्ट मेथड यूज करें और मैनेजमेंट को समझ में नहीं आए कि व्हाट द मेथड इज वांट्स टू से, मेथड इज वांटिंग टू से, तो ये उसका यूज नहीं है. ओके, द मेथड शुड बी एक्यूरेट बट द मेथड शुड बी सिंपल एज वेल. ओके, सिंपल भी होना चाहिए. इफ मैनेजमेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड मैनेजमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड, तो मेथड कोई काम की नहीं है. सो द मेथड शुड बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड. सो ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड, management should be able to take proper decision, accurate decision. Next, economy. Economics है तो इकोनॉमी तो रहेगा. इकोनॉमी मतलब the cost of matter should not be too high. There should be a balance. One has to strike balance between benefits derived from demand forecasting and the cost and effort is involved in demand forecasting. अगर कोई मेथड है वो एक्यूरेट मेथड है, अच्छा रिजल्ट उसके द मेथड इज प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट, बट उसका कॉस्ट इतना हाई है तो मैनेजमेंट के लिए कोई काम की चीज नहीं है. व्हाई? बिकॉज मैनेजमेंट इज नॉट एबल टू फाइनेंस दिस पर्टिकुलर फोरकास्ट मेथड. ओके, सो
the method should be accurate, it should be simple, and at the same time it should be economical. Minimum cost should be involved, or one has to strike balance between the benefits derived from particular method and the cost and effort is involved in particular method. Okay, next, availability. The good demand forecasting method should be able to produce quick result. Able to produce a quick result, वो result quickly produce करना चाहिए. Okay, if the method takes very long time to give result, the method will not be able to the method will not be very useful for the management to take decision. Okay, अगर method इतना लंबा चले कि तो management is not able to take any rational decision on the basis of the result produced by the particular method. Okay, because सिर्फ डिमांड फोरकास्टिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं है. डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग मैनेजमेंट हैज टू टेक मेनी decision regarding production, decision regarding investment, decision regarding funds, etc etc. कितने डिसीजन लेना है उनको. So the method should be able to produce quick result as soon as possible. Okay, next, durable. The result should be available quickly, but the result of particular method should be useful for long period of time. ऐसा रिजल्ट होना चाहिए जो रिजल्ट लॉन्ग पीरियड के लिए काम लगे. ओके, द मैटर result of particular matter should be useful for the company for longer period of time, and it depends on the relationship between two variables, reasonableness and simplicity of relationship. अगर आप प्राइस और डिमांड का रिलेशन है, इनकम और डिमांड का रिलेशन है, तो these relations are simple. You can understand that income increases, demand increases, price rise, demand fall. So you can explain. So when demand forecasting method is based on such kind of relationship, it explains the relationship between income and demand. So obviously the result of particular method will be used for long period of time. मगर अगर रिलेशनशिप ऐसा है कि पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट और डिमांड के बीच में रिलेशन है, तो ऐसे रिलेशनशिप ज्यादा यूजफुल नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज एडवर्टीजमेंट की, पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट की इफेक्ट कितने दिन तक रहेगी, कितने समय तक रहेगी. सो देयर इज इट इज नॉट अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. ओके, सो द डिमांड फोरकास्टिंग मेथड शुड बी able to produce meaningful result, and this result should be useful for the management or company for longer period of time. But वो durable होंगे कि नहीं है, होंगे, it depends on the simplicity and reasonableness of the relationship between two variables. Next, flexibility. The demand forecasting method should be flexible. It should not be rigid, because demand forecasting method, a particular demand forecasting method is based on certain assumption. Okay, these factors remain constant, these things will happen. Magar if there is change in particular variable or particular factor, obviously a demand forecasting method should permit us to make changes. मगर वो rigid है तो हम लोग change नहीं कर पाते. So demand forecasting method should be flexible. It should permit the forecaster to make changes. Last, timeliness. मतलब on up to date basis. एक word use हुआ कि lead time होना चाहिए. What is lead time? Lead time मतलब the time lag between occurrence of event and the time lag between forecast and occurrence of event. Okay, time lag between forecast and occurrence of event. Greater the lead time, larger the lead time, greater will be the usefulness. So sometimes firm is ready to sacrifice accuracy
to gain lead time. अगर एक्यूरेसी थोड़ी कम रहे तो चलेगा, मगर लीड टाइम ज्यादा होना चाहिए. Why? Because firm can take decision on the basis of this lead time. Let me explain. Suppose there are two matters, X and Y. X matter has forecasted, has given its result in March 2020 that by July 2020 demand for a commodity will increase by 10,000 units. This is the demand forecasting results of X matter. And Y matter. Suppose the Y matter had forecasted that, or the Y matter has produced its result in July 2019, that in July 2020 demand for a commodity will be 11,000 units. These are the two matters, X matter and Y matter. X matter ने कब रिजल्ट दिया था? मार्च 2020 में. Y ने कब दिया था? जुलाई 2019 में. सो यहां ओनली अप्रैल, मई, जून, सो ओनली 3 months एंड ईयर 1 year. मान लीजिए कि X की जो एक्यूरेसी है, मान लीजिए वो 90% है और Y की एक्यूरेसी सपोज 80% है. फिर भी Y matter is more useful than X matter. Why? Because it has produced, Y matter had given its result 1 year before the actual occurrence of the event. ओके, तो यहां लीड टाइम ज्यादा है, कंपनी के पास डिसीजन लेने का टाइम ज्यादा है. 10,000 5,000 में से डायरेक्ट 11,000 यूनिट्स हो जाएगी डिमांड, ऐसा अगर फोरकास्ट किया है. सो कितने डिसीजन लेने हैं, और ये 3 months इज नॉट इनफ टू टेक सच डिसीजन. ओके, कंपनी शुड एट लीस्ट रिक्वायर 1 year टू टेक ऑल द डिसीजन. सो ऑब्वियसली एक्यूरेसी कम होने के बावजूद Y matter is correct matter because here greater lead time. Okay, so sometimes or many times company generally sacrifice accuracy in order to earn lead time, because larger the lead time, greater will be the usefulness for the company. Okay, so these are all criteria for demand forecasting. First, demand forecasting method should be as accurate as possible. How can you check accuracy? By degree of deviation between forecast and actual sales. Simplicity. The demand forecasting method should be simple and easy to understand. Management should be able to understand what the method wants to say. Second, the method should involve minimum cost. Next, availability. The method should be able to produce quick result. Okay, next, the method should be the result of the method should be useful for the firm for longer period of time. Flexible, it should not be rigid, it should permit us to make changes. And timeliness में क्या word है? Lead time. Larger the lead time, greater will be the usefulness. Okay, आज के लिए इतना रहेगा. थैंक यू वेरी मच.